Hello everyone, so welcome to the new lecture on vector algebra. Today we will be discussing our new topic, cross product. So vector product or cross product. So as the name suggests, the this in this vector multiplication the output will be a vector. So the definition, let's write the definition first. A vector crossed with B vector is nothing but modulus of A into modulus of B into sine of the angle between them, and there is a vector associated. So this is a scalar, right? Number and sine of the angle, it's just a number, and there is a vector associated with this, which is n cap. So it's defined like this. So if we have, let's say, A vector and B vector, so the cross product A cross B will be in the direction defined by the right hand thumb rule. So अगर आप अपने right hand को A vector के साथ align करें and then you turn your right hand in the direction of the B vector, the direction of the thumb, so अगर अपने fingers को आप roll करें from A to B, the direction of the thumb will give you the direction of the A cross B. For example, in this case, A cross B will be, let's say A and B are in this plane and this is the angle between them. So A cross B will be outside of the plane. So I will use dot for outside of the plane and cross for inside of the plane. So this will go inside of the plane. So why do we use such notation? Because we want to show this arrow, and अगर आप ये arrow का head ऊपर से देखेंगे, तो this is arrow head, ठीक है, ये arrow head है. तो if your vector is going outside of the plane, तो आपको क्या दिखेगा, एक point दिखेगा. So this is the vector going outside the plane, and यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, arrow head, ठीक है, you can see the arrow head. And for vector going inside the plane, you will see the back side of the arrow. So arrow ka back side generally is represented by the cross. So this is the end point of the vector, right? Okay. So let's see, but why do we define this and what are the repercussions of this कि हम इससे क्या क्या define कर सकते हैं. But this is the basic definition. अगर आपको A cross B define करना है, you should put your palm in the direction of the A vector and you should rotate it in the direction of the B vector, and the direction of the thumb will give you the direction of the B vector. So that is given in the NCERT as the right hand thumb rule. Let's see here. So right hand thumb rule आपने physics में भी पढ़ा होगा in class 10th when you learn magnetism, and even in class 11th. Okay, so it was above. So So he has explained this using a simple example of x, y and z axis. So NCERT इसको x, y और z axis के respect में explain कर रहा है. So in the system, when the positive x axis is rotated counterclockwise into y axis, the right hand
will advance in the direction of the z axis. So you can imagine it like this. हम जो system follow करते हैं, which is it is a right-handed system. So जनरली आपने देखा होगा अभी तक लेक्चर में मैं x यहाँ ड्रॉ कर रहा था, y यहाँ ड्रॉ कर रहा था, z यहाँ ड्रॉ कर रहा था, एंड इफ यू कर्ल your fingers from x to y, it is pointing towards the z direction. अगर आप and so this means uh, I cap cross j cap will point towards the direction of the k cap. Okay, so but by definition this क्या result होगा ये? So our definition is a cross b is the modulus of a modulus of b into sine of the angle between them. So I cap का modulus, j cap का modulus into sine of the angle between them which is 90 degree into n cap. तो n cap का direction क्या होगा? x से y में it is towards positive z, so I should write k cap इसका direction आ गया n cap का, and this is 1, this is 1 and this is also 1. So I cross j comes out to be k cap. But this is not the result for j cross I. So j cross I क्या होगा? So from the same figure, j cross I, well, by definition it will be modulus of j cap, modulus of I cap, and the angle between them is 90 degree sine pi by 2. But let's see now. अगर मैं y के डायरेक्शन में अपने palm को रखूं and उसको x के डायरेक्शन में कर्ल करूं and it is pointing towards this direction, right? So the resultant is minus k cap here, and this is 1, this is 1, this is 1, and we find this is minus k cap. And in general it is true कि a cross b is not equal to b cross a, it is negative of b cross a. So they point in the opposite direction. A cross b का direction is opposite of b cross a. So let's move into NCERT and see what else NCERT has to say and write all the properties associated with the cross product. So this is our definition here. Theta of course belongs to 0 to pi. So we will add it here. Theta is greater than or equal to 0 and less than equal to pi. So at most you can have two vectors which are anti-parallel, या फिर they can be parallel also. और अगर आपको लग रहा है कि एंगल 180 से बड़ा है, no, you have to take this as the angle which will be between 0 to pi, right? Okay, so these are the cases. Okay. So let's see. So they have defined यहाँ पे इन्होंने definition दिया है cross product का. Then observations. So observations we will note it down and let's see. So A cross B. Okay, so observations are as follows. Okay, A cross B is a vector, so it is a vector pointing in the direction of the thumb. So as you move your palm from the direction of A to B. Okay, so first point is A cross B is a vector, it's not a scalar. Second point is A cross B can be 0 if it is null vector. Then what does this signify? So if A cross B is equal to null vector, so LHS किसके equal है? Modulus of A, modulus of B, sine theta, n cap, and this is equal to null vector. So I can take the modulus of this. So अगर हम इसका magnitude define करें तो we will get magnitude of A, which is just a number, magnitude of B, magnitude of sine theta, and sine theta for theta between 0 to pi, sine theta is always between 0 to 1 क्योंकि first and second quadrant में sine theta positive होता है, it is always between 0 to 1. You can look at the sine theta graph between 0 to pi, right? So this number is going to be positive, and mod of n cap. So any unit vector has the magnitude 1, and this should be equal to magnitude of null vector, which is 0. So this is 0. So we find magnitude of A
सो मैंने यहाँ पे क्या लिया, इसका मैग्नीट्यूड लिया इस वेक्टर का, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इज 0. तो इट इम्प्लाइज थ्री कंडीशंस कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है, या फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है, या फिर साइन थीटा 0 हो सकता है. सो लेट्स से in our case a vector is not null and b vector is also not null. ठीक है, so we can cancel these two results and we can find sine theta is 0. Sine theta is equal to 0 has two roots in 0 to pi, so this means sine theta, so theta can be 0 or pi. So this means the angle between two vectors, so 0, theta is 0 means angle between the two vectors is 0, and so vectors might be parallel. ठीक है, vectors are parallel, vectors are, let's say ये a vector है, b vector are parallel, so उनको मैं same length का भी draw नहीं कर रहा हूँ. या फिर theta is equal to pi, so theta, let's say एक a vector और ये रहा b vector, so a vector and b vector, so vectors can be anti-parallel, so vectors are anti-parallel, so they are in opposite direction, right? So in all कि theta is equal to 0 and pi implies, so ये vectors कैसे हैं, तो these are collinear, right, because they have the same or opposite direction, right? So this implies vectors must be collinear, so vectors must be collinear. So this is the collinearity का condition. So in last exercise हमने collinear proof करने के लिए लेंथ से किया था, मॉडुलस ऑफ ए बी, मॉडुलस ऑफ बी सी एंड मॉडुलस ऑफ ए सी, एंड उनका अगर सम ट्राइंगल लॉसेस इक्वल आ रहे कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर. नाउ वी कैन डू इट फ्रॉम वेक्टर्स कि if a cross b is null vector, it implies, so given that a is not null and b is not null, it implies a and b must be collinear. A and b must be collinear, and vice versa is also true. If a and b are collinear, then their cross product must be 0. So very very important condition. So this can save you time in doing the collinearity wala question and can be helpful in attempting many JEE mains problems. Let's see more observations about cross product. So yes, he said if they are 0, they are parallel, right? Okay. And also one of the vector can be also null, but so it has one more thing in this step only, a cross a vector, by definition a cross a will be null. Dot product में ऐसा नहीं था, right? A dot a was mod of a square, right? Mod of a square, क्योंकि mod a cos 0, right? ठीक है, mod a magnitude of a and to cos 0 is 1, so this became this result. But this time we have magnitude of a into sine of 0, because both vectors, because they are same vectors, they have angle 0 between them, into n cap, and we find LHS is 0 into n cap, because sine 0 is 0, and this is equal to null vector. So अगर आप एक वेक्टर का अपने आप से या उससे पैरेलल वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, then the result will be null vector. Moving further to the third observation, if theta is pi by 2, okay, so then we have this result. Yes, so something is missing here, so n cap is missing here. Okay, so a cross b by definition is
magnitude of A, magnitude of B, sine of the angle between them, but sine of, and since theta is pi by 2, sine pi by 2, which is 1 into n cap, and our result is magnitude of A, magnitude of B into n cap. So this is a vector and whose result is this. But magnitude of A cross B will be magnitude of A into magnitude of B into magnitude of n cap, which is 1. So which is the NCERT result. So they should keep a mod here if they do not want to write n cap there. So it is magnitude of A into magnitude of B. Okay. Next point that we have is, तो हमने already define करने की कोशिश कर दी I और J के केस में. So let's define it properly now. So and on the top we have K cap. Okay. So it's a, हमने अभी भी define किया A cross A is 0. So I cross I क्या होगा? Null vector. J cross J will be null vector. K cross K is null vector. And we have chosen a right-handed system in which I cross J will be K cap, J cross K will be I cap, and K cross I will be J cap. To remember, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं. If you draw your axes like these, x, y and z, so अगर आप x के डायरेक्शन से y की तरफ अपने पाम को घुमाएंगे तो so I cap से J cap की तरफ घुमाएंगे, you will pointing towards K cap. एंड अगर हम J यानी Y से अगर Z की तरफ यानी K cap की तरफ घुमाएंगे तो वी आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स X, सो I cap. एंड K क्रॉस I, सो अगर हम Z से X की तरफ घुमाएंगे अपने फिंगर को, वी आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स J cap, सो Y डायरेक्शन में. And so this is the positive circle, so you can remember it like this: I, J, K, and you can put a positive in between. अगर I से J जा रहे हैं तो then result will be K cap. J से K जा रहे हैं then result will be I cap. K से I जा रहे हैं then result will be J cap. This is a negative of this because let's see, J cross I क्या होगा, will be minus of K cap. हमने define किया था A cross B is negative of B cross A. We'll see it in a second also as a different point in this lecture. So, and K cross J is minus I cap. I cross K is minus J cap. So you can define it as a negative circle कि I, J, K आप simply ऐसे लिखेंगे. And but I से आप कहाँ draw करिए, K की तरफ arrow, K से J की तरफ, J से I की तरफ, and you should put a negative inside कि I से अगर I cross K करेंगे result will be minus J, K cross J will be minus I, J cross I will be, so J cross I will be minus K. And you can look into diagram also कि J cross I means Y से अगर आप X के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करते हैं, so Y से X के डायरेक्शन में, you will find the direction is of the negative Z direction. Okay. So these are some simple results अभी तक. And हमने cos theta define किया था in dot product. Now we can define our sine theta. So by definition we have A cross B is magnitude of A, magnitude of B, sine theta, n cap. अगर हम इसका magnitude ले ले left side का, तो magnitude of A cross B is nothing but magnitude of A, magnitude of B, sine theta, which will be positive between 0 to pi, and n cap का magnitude कितना होगा, 1. So this is our result, and we find the value of sine theta as magnitude of A cross B divided by magnitude of A and magnitude of B. There is a simpler definition. हमने cos theta define किया था पहले.
cos theta was defined by A dot B divided by mod A mod B. So scalar product में. And we also defined cos theta as the dot product between the unit vectors, right? A cap dot B cap. So similarly here we also have क्रॉस प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर्स के लिए कि इफ यू डू ए कैप क्रॉस बी कैप, this result will be magnitude of a cap into magnitude of b cap into sine of the angle between them into n cap and magnitude of a cross b. So these two are 1, right? 1 and 1. And अगर मैं इसका magnitude ले लूँ a cross b का, so this will be nothing but sine theta and magnitude of n cap कितना होगा? 1. So this is the definition of sine theta. And we have so now we have also defined कि sin theta क्या होता है, cos theta क्या होता है, a cap dot b cap, sin theta क्या होता है, it is magnitude of a cap cross b cap. So vector आएगा a cross b and उसका magnitude, right? It's just a number, right? हमने cos theta और sin theta define किया in terms of vectors, so in terms of unit vectors. So okay, तो हमारे पास sin theta की वैल्यू आ गई. Now let's see नेगेटिव क्यों होगा a क्रॉस b क्रॉस a के. So next point is the sixth point. So sixth point says क्या कह रहा है, a क्रॉस b is equal to negative of b क्रॉस a. So let's say ये रहा मेरा a वेक्टर, ये रहा मेरा b वेक्टर and the angle between them is theta. So n cap a क्रॉस b के केस में n cap का डायरेक्शन क्या हो रहा है, so a से b में जाएं तो n cap is pointing outside of this board, so it is this direction, right? So a क्रॉस b by definition कितना आ रहा है, so a क्रॉस b is magnitude of a, magnitude of b, sine theta into n cap, and this is the a क्रॉस b का वैल्यू है, ठीक है. लेट्स सी b क्रॉस a क्या आ रहा है, b क्रॉस a. सो अगर मैं b की तरफ अपने पाम को रखूँ एंड a की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करूँ, इट इज पॉइंटिंग इनसाइड द प्लेन. सो b क्रॉस a का डायरेक्शन कैसा आ रहा है, सो इट इज माइनस n कैप की तरफ आ रहा है. दिस इज, सो n कैप इज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू योर बोर्ड एंड उसके अंदर आ रहा है, तो आई से नेगेटिव एंड आई विल शो इट यूजिंग अ क्रॉस, राइट, ठीक है, इनसाइड द प्लेन. सो b cross a is defined as magnitude of b, right, magnitude of a, sine of the angle between them, and direction क्या आ रहा है, minus n cap, and from 1 and 2, so 1 and 2, so from 1 and 2 दोनों नेगेटिव आ रहे हैं एक दूसरे के, and we can say a cross b is equal to negative of b cross a. So वेक्टर्स अंडर क्रॉस प्रोडक्ट डू नॉट कम्यूट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के अंदर वो कम्यूट करते हैं, a डॉट b सेम एज b डॉट a. We have already defined the 7th point, so let's define 8th and the 9th point, the area of the triangle and the area of the parallelogram. So सो अगर a और b दो वेक्टर्स हैं, तो व्हाट डज a क्रॉस b रिप्रेजेंट. सो ऐसा करते हैं कि हम 9th पॉइंट को पहले रिप्रेजेंट कर सकते हैं वैसे तो, बट ठीक है, लेट्स डू 8th फर्स्ट कि बट हाँ, वी शुड डिफाइन 9th वन फर्स्ट कि a क्रॉस b is nothing but the area of the parallelogram form. So let me remove this. So 9th point first कि what is magnitude of a cross b. So by definition magnitude of a cross b is magnitude of a, magnitude of b into sine of the angle between them, right? N cap का modulus is 1, right?
सो अभी अभी डिफाइन किया था हमने, मैग्नीट्यूड लिया हुआ है यहाँ पे। एंड लेट्स सी इफ दिस इज ए वेक्टर and this is b vector, right? A vector, b vector, and magnitude of a is this length, magnitude of b is this length, and this is the angle between them. तो ये क्या represent कर रहा है? So if I look into this quadrilateral, let's say p q r s, and मैं यहाँ पे एक construction करूँ कि I want to draw a perpendicular from s on p q, तो इसका length निकालते हैं, let's say p s t का. So in triangle PTS, let's calculate the value of ST. So ST divided by the let's say hypotenuse उस triangle में कितना, ये perpendicular, right? So hypotenuse कितना, PS किसके इक्वल आ रहा है, sin theta के, perpendicular by hypotenuse, right? So we can define ST as PS sin theta, but PS कितना है, PS is the length of the B vector, right? Length of the B vector. So length of the B vector into sin theta. So as you already know कि area of the parallelogram कितना होता है, area of parallelogram PQRS will be nothing but base into height. So हमने हाइट कैलकुलेट कर लिया, बेस कितना है पी क्यू, राइट, इंटू एस टी, राइट. पी क्यू कितना है, पी क्यू इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, राइट. एस टी कितना है, एस टी इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा. ओके, सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन थीटा, एंड वी जस्ट सॉ दिस रिजल्ट, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. So magnitude of A cross B represents nothing but the area of the parallelogram formed by AB and BC vector. ठीक है, AB and BC vector से जो आपका parallelogram बनेगा उसके area को represent करता है, and half of it will represent the area of the triangle. So that is the 8th point. 8th point क्या बोल रहा है, what will be the value of half of A cross B? Half of A cross B is nothing but half of magnitude. So A cross B का magnitude क्या होगा, magnitude of A, magnitude of B into sine of the angle between them. And let's see, so let's say this is my A vector, this is my B vector, and let's say इस बार मैं triangle draw कर रहा हूँ. So let me join these, so let me call this PQR, and मैं एक perpendicular drop कर देता हूँ यहाँ पे at point S. So let's calculate in triangle PQS. In triangle PQS हम क्या वैल्यू निकालेंगे, PS का वैल्यू निकालेंगे, हाइट, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR will be nothing but half into base into height, and base कितना है, magnitude of A. Let's calculate the height, so which is PS, right? So उसको ए लिखने के लिए बेस कितना है हमारा, क्यू आर लिख देते हैं, राइट, फिलहाल के लिए, एंड हाइट कितना है, पी एस. सो इन ट्राइंगल पी क्यू एस परपेंडिकुलर इज पी एस, हाइपोटेन्यूज क्या है, पी क्यू, एंड दिस इज साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, सो साइन थीटा, दिस इज साइन थीटा. सो वी फाइंड पी एस का वैल्यू एज PQ sin theta. Okay, so PS की वैल्यू कितनी आ रही है, the height is PQ क्या है, magnitude of B into sin theta. Let's put all the values. Base कितना है, QR is magnitude of A. Height कितना है, magnitude of B into sin theta, and which we just said it is equal to half of A cross B. So half of A cross B का magnitude is the area of the triangle formed by A vector and B vector. Okay, so this completes our discussion, and we have few examples before we continue to our exercise. So there are some properties, and हमें component form में cross product भी define करना. So let's write the properties first, not very difficult.
सो 3 वेक्टर्स के लिए इफ यू हैव ए क्रॉस बी plus C, you can do A cross B first, then A cross C. You can have an addition sign in between. अगर आपके पास लैम्डा से स्केलिंग हो रहा है तो आप लैम्डा टाइम्स A भी कर सकते हैं, पहले लैम्डा टाइम्स B भी कर सकते हैं, सेम एज द डॉट प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज. नाउ लेट्स डिफाइन. तो हमने वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया वेक्टर फॉर्म में. अब उसको हम कंपोनेंट फॉर्म में डिफाइन करेंगे. सो वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इन वेक्टर फॉर्म. हमने क्या डिफाइन किया? ए क्रॉस बी, विच इज डिफाइंड एज ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप. बट दिस इज नॉट वेरी यूजफुल इन द सेंस कि ए और बी कोई भी वेक्टर्स हो सकते हैं, एन कैप कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, बट इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, राइट? सो एन कैप will be a vector perpendicular to the plane of A and B, so it can point in any direction. So let's define the component form. So this is the vector form of cross product. So component form. So component form में इसको define करते हैं. So we have to define A cross B. So let's say our A vector is AX I cap plus AY J cap plus AZ K cap, and we have to take cross product with BX I cap plus BY J cap plus BZ K cap. So let's multiply and let's write all the 9 terms. So I will get AX times BX, I cap का cross product with I cap plus AX into BY, I cap का cross product with J cap plus AX BZ, I cap का cross product with K cap. Then so हमने यहाँ पे लैम्डा वाला प्रॉपर्टी यूज किया है कि इफ यू लेट्स सी नाउ अदर टर्म्स, लेट्स से ए वाई को जब मल्टीप्लाई करेंगे, सो ए वाई जे कैप, सो ए वाई जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वाई के कैप, ए वाई एंड बी एक्स गोज आउटसाइड, so ay bx, and we will get j cap cross I cap. So this is the second term from here and first term from here. Then second term and second term will give me ay by, j cap cross j cap. Third term will give me ay bz. So second term and third term ay bz, j cap cross k cap. And last 3 terms are coming out to be, so az bx k cap cross with I cap plus az by k cap crossed with j cap plus az bz k cap cross k cap. Now we will use our basic properties जो हमने define किए थे. हमने define किया था कि I cross I is same as J cross J is equal to K cross K, and all of them are null vectors, right? Okay, so this is some number into null vector, so this is a null vector, this is a null vector, this is a null vector, and किसी भी वेक्टर में नल वेक्टर को ऐड करते हैं तो we get the same vector back, so we can drop these terms, right? ठीक है, this is equal to the a vector, right? So we can drop these terms. I cross I क्या null, j cross j null, k cross k null. So let's, and what about these terms? I cross j, so positive circle से let's define I j k, right? And positive, so I cross j की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? So I have ax by, I cross j की जगह, and negative भी define कर देते हैं I j k,
एंड आई से मैं के गया, के से जे एंड जे से आई इज द नेगेटिव वन. सो आई क्रॉस जे फ्रॉम द पॉजिटिव सर्कल आई कैन सी आई टू जे जाने पे पॉजिटिव के आएगा. सो के कैप प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के. सो आई से के जाना है हमें, राइट. ठीक है, वी हैव टू गो फ्रॉम आई टू के. सो आई टू के कौन सा जा रहा है, नेगेटिव वाला, राइट. आई टू के एंड रिजल्ट मस्ट बी माइनस जे. आई विल राइट माइनस जे कैप है. ओके, देन सेकेंड वाले लाइन में आई गेट ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई. सो जे टू आई जाना है हमें. सो दिस वन, राइट. सो जे टू आई. सो जे टू आई is minus k cap. Then a y b z j cross k. So j to k is the positive circle, so I'll get plus I cap plus a z b x k cross I. k से I जाना, k से I is plus j cap and a z b z k cross j. So k to j is the negative circle. अगर हम k to j जाएंगे, result must be minus I. So let's collect our terms. So I cap के कौन से terms आ रहे हैं? So I cap के we have these two terms. So a z b y था ना, a z. So मैंने last term गलत लिखा है यहाँ पे. No sorry, a z b y k cross j is ये रहा. So this one, right. So I cap के coefficients are coming out to be a y b z minus a z b y. J cap के coefficient are coming out to be a z b x minus a x b z. K cap के coefficient are coming out to be okay. So K cap ax by minus ay bx. So this here is the component form of a cross b. But there is a more concise way to write this. So a cross b can also be defined in as a determinant of I j k. पहले क्या a vector, then you will write components of ax, ay, az, and then b, bx, by, bz. This is the determinant form. Okay, this is the component form and in form of a determinant. So you can check this result. You can open and check. Let's see. So इसको open करेंगे तो then we'll, let's say open about first row. ठीक है, open about row 1. So we will get I cap. Then I will get a determinant, right, which is ay az, by bz. Then minus j. Then I will get minor क्या आएगा यहाँ पे, ax az and bx bz plus k cap. एंड यहाँ पे माइनर क्या आएगा, ax ay bx by. And if you open all of these, so I cap के साथ में क्या आएगा, you will find this ay bz minus az by, this result. J cap के साथ ax bz and az bx, but negative sign है, then it will become this result, right. And we have this one. So generally cross product के लिए you remember this result, not that longer one. So आप determinant form में लिखिए, determinant open करिए, यहाँ पे सिर्फ numbers रहेंगे. And अगर आपको determinants आता है, then you are good to go in this also. So it's same as dot product. Dot product में हमने उसका वेक्टर फॉर्म लिखा था, a डॉट b का, a डॉट b was mod a mod b cos theta. हमने उसका कंपोनेंट फॉर्म में लिखा था कि a डॉट b is ax bx plus ay by plus az bz. एंड नाउ वी हैव यहाँ पे भी उसका वेक्टर में डेफिनेशन एंड कंपोनेंट फॉर्म में डेफिनेशन. ओके, ये रहा डिफाइन किया हुआ.
Let's see now examples. So let's do few examples. So what is magnitude of a cross b? तो पहले क्या करते हैं, a cross b निकाल लेते हैं. a cross b, so हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे इसको, ये कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है i j k, एंड सो a के कोएफिशिएंट लिखने हैं, so which will be 2 1 and 3 and 3 5 and -2. Let's open this. So i कैप के साथ में आ रहा है 1 3 5 -2, देन माइनस j कैप जिसके साथ में आ रहा है 2 3 3 -2, प्लस k कैप जिसके साथ में आ रहा है 2 1 3 5. ओपनिंग इट फर्दर वी गेट i कैप के साथ में नंबर्स आ रहे हैं -2 -15, माइनस j कैप के साथ में नंबर्स आ रहे हैं -4 -9, एंड k कैप के साथ में नंबर्स आ रहे हैं 10 -3. So our vector is -17 I cap, -13 will become +13 j cap, and +7 k cap. This is a cross b. Let's define magnitude of a cross b. So इस vector का magnitude कितना होगा? Well, we have to just put a square root and square and add the coefficients. So 17 square plus 13 square plus 7 square. So 17 square is 289. 13 square is 169. And 7 square is 49. Let's add these numbers. 289 plus 169. This comes out to be 8. And then 1 carries 15. 1 458 plus 49. So 17 1 0 1 507. So it is coming out to be square root of 507. Let's check the answer from the book. Square root of 507. Okay. So moving to next question. So find the unit vector perpendicular to each of these vectors. So n cap, so अगर आपके पास कभी भी कोई दो वेक्टर्स गिवन है, राइट, a एंड b, इन दोनों से परपेंडिकुलर वेक्टर आप कैसे निकाल सकते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट लेके, राइट. ठीक है, कि a क्रॉस b और b क्रॉस a, राइट, से जो आपको वेक्टर मिलेगा, राइट, these are the n cap, right? These are the n cap or minus n cap, right? And these are perpendicular to both a and b vector, right? So this is a vector perpendicular to both a vector and b vector, okay? Or you can say this is a vector which is out of plane of a of the vector जिसमें a and b है, right? अगर किसी प्लेन में a and b है तो उससे आपको नॉर्मल वेक्टर मिलेगा. सो लेट्स डिफाइन. अभी हमारे पास a वेक्टर गिवन है, यहाँ पे कितना i प्लस j प्लस k. हमारे पास b वेक्टर गिवन है विच इज i प्लस 2j प्लस 3k. हमें a प्लस b वेक्टर निकालना है. सो दिस इज 2i प्लस 3j प्लस 4k. a माइनस b वेक्टर निकालना है. सो a में से b सब्ट्रैक्ट किया तो i कैंसिल हो गया, तो 0i माइनस j and minus 2k. So I can say this is c vector and this is d vector, right? Okay. So let's find a vector which is normal to both. So vector perpendicular to both c vector and d vector will be, कौन सा वेक्टर होगा वो? c क्रॉस d. Okay, this is a vector perpendicular to both of these. ठीक है. So let's find c cross d now. So which is basically, हम यहाँ क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? c was a plus b vector, right? ठीक है. This was a minus b vector, right? ठीक है. And what we are calculating is इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट. So c cross d
और a प्लस बी का क्रॉस प्रोडक्ट विद a माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज आई जे के कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। डिटर्मिनेंट यहाँ, डिटर्मिनेंट के में यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स क्या आ रहे हैं? सो सी वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स हैं, सो सी एक्स सी वाई सी जेड क्या है? सो देयर आर सी वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स हैं 2, 3 एंड 4, एंड ए माइनस बी वेक्टर में क्या आ रहा है? 0, -1 एंड -2। सो दिस कम्स आउट टू बी, आई कैप के साथ में आ रहा है 3, 4, -1, -2, नेगेटिव जे कैप के साथ में क्या आ रहा है? 2, 4, 0, -2, के कैप के साथ में आ रहा है 2, 3, 0, -1, एंड वी फाइंड आई कैप के साथ में -6, सो माइनस ऑफ -4 +4, ध्यान से चेक करिएगा, -j, एंड देन इस ब्रैकेट में आ रहा है -4, -0 प्लस के कैप, इसके साथ में आ रहा है -2, -0, एंड वी फाइंड -2 आई कैप। So this is the n vector, right? This is the n vector, normal vector है, unit vector नहीं है, normal है, right? This is normal to both of the vectors, right? देखिए c and d दोनों से normal है। n vector कितना आ रहा है? ये, and then +4j and -2k. Let's find n cap now. तो n cap कैसे निकालेंगे? So this is the unit vector perpendicular to both a plus b and a minus b. So this is a unit vector perpendicular to c and d vector, right? This is coming out to be n vector divided by magnitude of n, right? So magnitude of n is square root of 4 plus 16 plus 4, which is square root of 24. So I can take 2 outside, which is 2 root 6. So yeah, 4 बाहर लगे तो वो 2 बन गया. So let's divide by this. So I get -2 by 2 root 6 I cap plus 4 by 2 root 6 j cap and -2 by 2 root 6 k cap. So n cap is -1 by root 6 I cap plus 2 by root 6 j cap and -1 by root 6 k cap. So this is a unit vector perpendicular to, but book में you will find there are two results, because अगर मेरे पास ये दो वेक्टर गिवन है, इन दोनों से परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एक कहाँ हो सकता है? इस प्लेन के बाहर भी हो सकता है, इस प्लेन के अंदर भी हो सकता है, राइट? सो you should write plus minus. So n cap will be plus minus of -1 by root 6 I cap, क्योंकि ये इधर भी हो सकता है, एंड आई कुड फाइंड b क्रॉस a ऑल्सो, राइट? तो c क्रॉस d की जगह मैं d क्रॉस c भी निकाल सकता था, दैट विल बी ऑल्सो perpendicular to both of these vectors. तो उसका नेगेटिव भी, राइट? ठीक है, so we should include both results. So these are two unit vectors which are perpendicular to both of those vectors. Let's check our result. Okay, so here are, and but you should put plus minus, right? Okay, so next question. So find the area of the triangle formed by all these 3 points. Okay, so हम एक रफ सा डायग्राम बना लेंगे. Let's say this is A, this is B, this is C. A है 1 1 1, B है 1 2 3 एंड C है 2 3 1. सो अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो I have lots of formulas from class 9th and 10th and 11th, but अब ये 3D में एरिया निकालना, राइट? सो
वी विल यूज अवर डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम कोई भी दो वेक्टर्स कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, राइट. लेट्स कंस्ट्रक्ट ए बी वेक्टर एंड लेट्स ऑल्सो कंस्ट्रक्ट ए सी वेक्टर, एंड इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेके वी विल यूज दिस फॉर्मूला, राइट. एरिया ऑफ triangle ABC, I will use it to be half of cross product of AB क्रॉस AC एंड उसका मैग्नीट्यूड. सो आप कोई भी दो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर सिंस आई कंस्ट्रक्ट वेक्टर ए बी, तो ए बी में पॉइंट ए और बी दोनों का इंफॉर्मेशन है, राइट. एंड ए सी में ए और सी दोनों का इंफॉर्मेशन है. तो बेसिकली ए बी और ए सी में यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. एंड इट्स नॉट नेसेसरी आप ए बी और ए सी ही चूज़ करें, आप बी ए और बी सी भी चूज़ कर सकते हैं, आप सी बी और सी ए भी चूज़ कर सकते हैं. आई एम चूजिंग दीज टू. सो ए बी वेक्टर कितना आ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल लिख के, सो इट इज 1 minus 1 I cap. So B is the final point. So 2 minus 1 J cap plus 3 minus 1 K cap. So AB vector is 0 I cap plus J cap, 1 times J cap, right, plus 2 times K cap. Now let's find AC vector. AC vector final point is C, so 2 minus 1 I cap plus 3 minus 1 J cap plus 1 minus 1 K cap. This is coming out to be 1 I cap plus 2 J cap plus 0 times K cap. Now let's find AB cross BC. AB cross AC. AB cross AC vector पहले निकालेंगे. So this vector is nothing but, it's a determinant and IJK. यहाँ पे हम नंबर्स पुट कर देंगे जो हमने निकाले. AB के कंपोनेंट्स क्या हैं, 0 1 एंड 2. AC के कंपोनेंट्स क्या है, 1 2 और 0. लेट्स फाइंड दिस. तो दिस इज आई कैप के साथ में क्या आ रहा है, 1 2 2 0. देन माइनस जे के साथ में 0 2 1 0. के कैप के साथ में क्या आ रहा है, 0 1 1 2. सो आई कैप का कोएफिशिएंट आ रहा है, ब्रैकेट में देखते हैं, 0 minus 4. माइनस जे कैप के साथ में आ रहा है 0 minus 2. के कैप के साथ में आ रहा है 0 minus 1. सो आई फाइंड minus 4i plus 2j and minus k cap. So minus k cap. And our formula is area of triangle ABC. Area of triangle ABC is half of magnitude of AB cross AC. So इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, कितना आ रहा है वो, स्क्वायर रूट ऑफ -4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, विच इज हाफ ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर 16 प्लस 4 प्लस 1 हाफ रूट 21. सो रिजल्ट इज रूट 21 by 2 square root units. Let's check this result. Okay. So last question before the exercise. Find the area of the parallelogram whose adjacent sides are given by these two vectors A and B. So adjacent side given है, तो you can draw a simple diagram, है ना. A वेक्टर गिवन है, B वेक्टर गिवन है, एंड आपको इसका क्या निकालना है, एरिया. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने डिफाइन किया था. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाय डेफिनेशन इज मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B. सो हम क्या करेंगे, पहले A क्रॉस B निकाल लेते हैं. तो A क्रॉस B इज I J K एंड A के कंपोनेंट्स लिखते हैं. तो A के कंपोनेंट्स आर 3 1 and 4. J के components are 1 -1 and 1. Let's open this and find the A cross B vector क्या आ रहा है. A cross B vector is so I cap के साथ में I get 1 4 -1 1
j cap के साथ में I get 3 4, so minus of j cap, sorry, minus of j cap के साथ में 3 4 1 1 and plus k cap के साथ में I get 3 1 1 minus 1. Okay, so this result is 1 plus 4 minus j cap के साथ में 3 minus 4, k cap के साथ में minus 3 minus 1. So this is 5 I cap. This is minus 1, so it will become plus 1 j cap and minus 4 k cap. अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए क्या करना है, बस इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is magnitude of a cross b, so which is square root of 5 square plus 1 square plus minus 4 का square, which is 25 plus 1 plus 16, so which is 42, square root 42 square units. Okay, so there is a small exercise which will be done in the next lecture. So thank you for watching. Notes will be available below the video in the PDF format. So like, share and subscribe.